सो हेलो दोस्तों, दिस इज खुशी एंड इस वीडियो में हम बिटकॉइन की वीकली ट्रेड्स की बात करेंगे एंड द एक्सपायरी विल बी ऑफ 20th अक्टूबर। तो पहले देख लेते हैं कि लास्ट फ्यू डेज से बिटकॉइन कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो द बिटकॉइन हैज बीन इन दिस रेंज ऑफ 25,000 28,500 एंड मैंने ये रेंज इसलिए लिया है क्योंकि बिटकॉइन हैज ऑलमोस्ट एवरी टाइम बीन इन दिस रेंज, बट इट हैज still touched the maximum and the minimum point of this range. And the wider range that I'll be talking about is 24,000 and 29,500. And in past 2 months, it has only touched it a bit. तो ये जो सेकेंड जोन है ये हमारा काफी काफी सेफ जोन हो सकता है। इसके बाहर की अगर ट्रेड्स हम लेते हैं एंड इसके अंदर की ट्रेड्स भी और इस ब्लू लाइन के बाहर की ट्रेड्स हमारे लिए वो भी थोड़ी थोड़ी सेफ हो सकती है। सो मैं इस वीडियो में आपको जो बताऊंगी दैट विल बी अ स्ट्रैंगल, क्योंकि मार्केट इज साइडवेज एंड वी जस्ट डोंट नो कि अगले दिन हमारा बिटकॉइन किस डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे कि परसों के दिन द बिटकॉइन वाज 26,600 and yesterday it was 26,800 and right now it is 27,000 and उसके जस्ट पहले बिटकॉइन एकदम से काफी गिर गया था। तो we just don't know कि where the bitcoin will go. So the market is very sideways and we have to take a trade according to that only. तो स्ट्रैंगल बेचना हमारे लिए काफी काफी सेफ ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि we get the hedge on both the sides. That is, if the BTC even goes up, we get a hedge of the put that we sell, और अगर BTC goes down, then we get the hedge of the call that we sell. तो कॉलर पुट का कॉम्बिनेशन बेचना कैन बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। लेट्स गो टू द स्ट्रैटेजी बिल्डर एंड चेक कि हम जिस कॉल और पुट जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो कैसा परफॉर्म करने वाला है। और अगर आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर यूज करना नहीं आता, देन यू कैन गो टू दिस आई बटन एंड वॉच द वीडियो एंड लर्न इट, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड टूल टू गेट टू नो कि हाउ योर स्ट्रैटेजी इज वर्किंग एंड हाउ व्हाट इज द PNL विल बी आफ्टर द एक्सपायरी. So I've taken this trade already, that is of 24,000 29,500 and मैंने इसका पेपर ट्रेड ले रखा है और मैंने 500 क्वांटिटीज बेची हुई है, दोनों की कॉन्ट्रैक्ट बेचे हुए हैं। हाँ, so जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो आफ्टर 7 days प्रॉफिट रहेगा दैट विल बी ऑफ $15.3 एंड अगर आप इसकी एक 1 BTC क्वांटिटीज भी बेचते हैं then it will be just double, that is 30.60. I think it's not a bad trade to take and to get a profit of 15.3 in just 7 days. Let me just tell you about this 1 standard deviation and the 2 standard deviation. So if we take a trade that is outside this 2 standard deviation, then it means that you have a 5% probability of the asset lying in your region. And inside this 2 standard deviation, we have the 95% probability that the asset value will lie inside this range. And if the asset lies in this range, trade gets a little bit riskier. If we talk about this 1 standard deviation, we have a 66% probability of the asset lying in this range. So the probability of us getting into loss actually increases. So whenever you are taking a trade, just try to avoid this situation where your trades are in this 1 standard deviation zone. And if you're a good risk taker and a reward taker, then you can just take whichever trade that you want. But according to me, you should always take a trade that is around 2 standard deviation. So now let's see which other trades that we can take in this market. So right now the market, like the BTC, is going same around the same line. So the movement is really less. But if the movement increases, then if you are very very active on this platform, then you can take the trade as soon as the Bitcoin moves 200 points either up or 200 points either down. तो जैसे ही बिटकॉइन 200 पॉइंट ऊपर जाता है, आप कॉल बेच सकते हैं जो कि आपको माइंड ब्लोइंग प्राइसेस में मिलने वाली है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि बहुत पास की कॉल बेच दो, जैसे कि 28,000 की कॉल बेचना विल बी अ वेरी वेरी रिस्की टास्क फॉर यू। बट आप 29,500 एंड 30,000 में से किसी एक कॉल को बेच के काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। एंड इफ द PTC गोज डाउन, तो आप पुट बेच सकते हैं एंड वो भी बहुत पास की ना बेचें, काफी दूर की बेचें, सो दैट यू बी ऑन द सेफर साइड। तो आप 24,500 या फिर 24,000 की पुट भी बेच सकते हैं इन एट द टाइम ऑफ मूवमेंट। एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड कीप ट्रेडिंग ऑन डेल्टा एक्सचेंज।